Good morning students, welcome to online education system. This is a lecture of maths. And in this lecture we are going to discuss the trigonometry of 10th class. And in this lecture we are going to discuss the questions of MCQs type which are related to trigonometry. Okay. So the very first question of the lecture is sine 45 degree plus theta minus cos 45 degree minus theta equals to what? And your answers are options. First option is 2 sin theta. B option 2 cos theta. C option 0. D option is 1. Let's start the solution. Sin 45 given जो हमारे पास है, it is sin 45 plus theta minus cos 45 minus theta. Okay. So from here sin 45 plus theta will be as it is minus cos theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो cos theta को मैं लिख सकता हूँ sin 90 minus theta and this is sin 90 and in place of theta what we have 45 minus theta, right? So we will put 45 minus theta and from here what we have sin 45 plus theta minus sin 90 minus 45 plus theta. So what we have right now sin 45 plus theta minus sin 45 plus theta and this is sin 45 plus theta minus sin 45 plus theta equals to 0. So your answer is C, 0. Okay, so this is the solution. Please write down it. Now we will discuss the next question. The question is sec square 10 degree minus cot square 80 degree equals to what? And your options are 1 B 0 C 3 upon 2 and D 1 upon 2. Now here जो हमको गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं हम लोग, राइट ना? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. sec square 10 degree plus cot square 80 degree. Now what we have, sorry, it will be minus, huh?
सो माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अभी किसी एक को हम क्या करते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या इनमें हम पुट अप कर सकते हैं सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकता हूं, बिकॉज सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट ना, इसलिए मैंने यहां पर ये लिख लिया, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर 10 डिग्री को मैं टेन स्क्वायर एज इट इज, और 10 डिग्री को मैं 90 माइनस 80 डिग्री लिख लेता हूं, minus cot square 80 degree. So from here what we have 1 plus tan square 90 minus theta equals to cot square theta. So it become cot square 80 degree minus cot square 80 degree. Cot square 80 degree to cot square 80 degree cancel, that is 1. So your answer is option A, 1. Okay, so this is the solution. Please write down it. Now we'll discuss the next question. The next question is cosec square 57 degree cosec square 57 degree minus tan square 33 degree equals to what? B option 1, C option -1, and D option 2. Now what we have, let's start the solution with the given things. Cosec square 27 degree minus tan square 33 degree. ओके, अभी cosec को मैं cot के फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट ना, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर 27 डिग्री माइनस tan स्क्वायर सॉरी 57 है, दिस इज 57 tan स्क्वायर 33 degree. Okay, because we know that 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. Okay, now अभी यहां से 1 plus cot square 57 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot square 90 माइनस 57, या फिर हम इसको tan स्क्वायर एज इट इज लेने लेते हैं, और 33 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 57. नाउ व्हाट वी हैव 1 प्लस cot स्क्वायर 57 माइनस 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा. तो सिमिलरली tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर हमारे पास क्या है, थीटा की प्लेस पर हमारे पास 57 डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 57, राइट ना, दिस इज cot स्क्वायर 57 डिग्री. नाउ cot square 57 to cot square 57 cancel, because
One is positive, one is negative. So answer is 1. So what we have? Now we have option B 1. Okay. Please write down it. Then we will discuss the next question. Now the next question is 2 tan square 30 degree sec square 52 degree sin square 38 degree upon cosec square 70 degree minus tan square 20 degree. And your answers are option A 2, option B 1/2, option C 2/3, option D 3/2. Okay. First of all, what we can do now? Here, solution 2 tan square 30 degree sec square 52 degree sin square 38 degree upon cosec square 70 degree tan square 20 degree. Okay. Now what we have? 2 will be as it is. tan square 30 तो tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3. तो आप यहाँ पे 1/√3 पुट अप कर सकते हैं, राइट ना. 1/√3 इसका स्क्वायर ऐसे स्क्वायर. सेक स्क्वायर 52 को मैं लिख सकता हूँ 1 cos square 52 into sin square 38 and the whole upon is cosec square 70 को मैं लिख सकता हूँ 1 plus cot square 70 degree minus tan square 20 degree. Now in next step what we have 2/3 because 2 as it is 1 का स्क्वायर 1 and √3 का स्क्वायर 3. 2 into 1/3 2/3 हो जाएगा, राइट ना. into 1 cos square 52 को मैं लिख सकता हूँ cos square 90 minus 38 into sin square 38 upon 1 plus cot square 70 will be as it is minus tan square 70 को मैं लिख सकता हूँ tan square 90 minus 70. So what we have in next step, we have 2/3 into 1 cos 90 minus theta equals to sin theta. So cos square 90 minus theta equals to sin square 90 theta, right now. So here what we have sin square 38 into sin square 38 upon what we have 1 will be as it is cot square 70 as it is minus cot square
70 because tan 90 minus theta equals to cot theta होता है. Similarly cot tan square 90 minus theta will be cot square theta. Okay, so from here what we have, cot square 70 to cos square 70 cancel, one is positive, one is negative, right now? Okay, so what we have 2 upon 3, and similarly यहाँ पर sin square 38 cancel, 2 upon 3 whole upon 1, so it will be 2 upon 3. So the answer is your answer is 2 upon 3, that is option C, है ना? Please write down the solution, then we will discuss the next question. Next question of the lecture is sin square 22 degree plus sin square 68 degree upon cos square 22 degree plus cos square 68 degree. Sin square 63 degree, okay, plus sin 27 degree cos 63 degree, okay, equals to what? Your options are A 0, B 1, C 2, D 3. Okay, now let's start the solution. A, सबसे पहले तो हम जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, दैट इज sin square 22 degree plus sin square 68 degree upon plus sin square 63 degree plus sin 27 cos 63. Okay, so from here what we have, sin square 22 degree will be as it is plus sin square 90 minus 22 degree upon cos square 90 minus 68 degree plus cos square 68 degree will be as it is, right ना? ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस sin square 63 as it is, sin square 63 as it is प्लस sin 27 को मैं लिख सकता हूं sin 90 minus 63 and cos 63. What we have, sin square 22 degree प्लस इसको मैं लिख सकता हूं cos square 22 degree, ओके, अपॉन cos 90 minus 68, that is cos square 22 degree
sorry 68 degree, and cos 90 minus theta equals to sin theta. Similarly, cos square theta, cos square 90 minus theta equals to sin square theta. So it becomes sin square 68 degree and cos square 68 degree plus sin square 63 degree plus cos 63 into cos 63. So what we have in next step, we have 1 upon 1, because sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 हो गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव, प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस cos 63 इंटू cos 63 कितना हो गया, cos square 63. Now what we have, 1 plus 1 that is equals to 2. So the answer is option number C, 2. Please write down it. In next lecture we will discuss some more questions of MCQs type which are related to trigonometric identities. Thank you very much for watching the videos.